possible application of forces in different cases, and possibly all the concepts, the facts, the relations, permutations and combinations based on force. So let's think. The first point here is force can be used for finding the change in momentum. And for understanding it, let's take example of this student. ये जो स्टूडेंट है, मान लीजिए किसी मोमेंटम P1 से मूव कर रहा था सड़क पे, एक पेड़ लगा हुआ था, तो ये पेड़ से टकरा जाता है, यू कैन विजुअलाइज, और टकराने के बाद इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का उल्टा हो जाता है, मान लीजिए कोई वेक्टर P2 हो जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस पेड़ ने इस बच्चे पर कितना फोर्स लगाया होगा, तो उसके कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट चेंज इन मोमेंटम का। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एंड दिस इज ऑल्सो रिटन एज एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल। सो दिस इज हाउ we define the force. So the average force on a body is equal to change in momentum of the body divided by the time interval. So this is the first application of the force. Second concept comes is finding instantaneous momentum. So here let's take the example, then another example. Suppose a student starts moving with initial momentum P1. It has got a momentum P2, P3, P4 at later instants. So momentum is changing with respect to time. So momentum of the student is changing with respect to time, and we need to find momentum at a certain instant when it is at a certain position, and we need to find momentum at that particular point. So for finding this, what we can do is that we can find the force. So the instantaneous force is dp by dt, rate of change of linear momentum. So from here dp comes out to be f dt, and if we integrate the expression, we have integration of dp is equals to integration of f dt. Limit is from t1 to t2 and limit is from p0 to p. So if we solve the integration, we have p minus p0 is equals to integration f dt from t1 to t2, and from here we have momentum as p0 plus integration f dt from t1 to t2. So this is how we can find instantaneous momentum using the concept of force, so which is another application of force. There is third application, which is finding instantaneous acceleration. So we can write force as dp by dt. Now momentum is mass into velocity. So using product rule, we can write this expression as dm by dt into v plus m into dv by dt. So from here we can say that f is equals to dm by dt into v plus m into dv by dt. So this can be written as dm by dt into v plus m into a, where a is acceleration of the body. Now if mass is constant, so we can say that dm by dt is equals to 0. So force here can be written as mass into acceleration. So this is another important application of force, that for a system of constant mass, the external force on that system is mass into acceleration. So this is what we can say. Now there is another concept of finding work done. So work done is for a constant force F dot S, the dot product of force and displacement. This is another concept where force finds application. Another point is work done can be written as Fs cos theta. So here F is the force, S is the displacement, and theta is the angle between force and displacement. Another concept is, if we are being given force displacement graph, then work done is integration of FDS, which is area under force displacement graph with sign, which can be written as minus A1 plus A2 minus A3 plus A4. There is another concept of work done, which is area under force displacement graph with sign. So these are the possibilities of applications of force in different cases. There is another concept of work done in case of variable force, so that is integration of F dot ds for work done by the variable force. Then there is another concept of relation with kinetic energy. So the relation is work done is integration of F dot ds, which is change in kinetic energy, which is K final minus K initial. So this is how force find applications in different cases, different concepts, different permutations and combinations. Now if we talk about the force, so there are four fundamental forces in nature: electromagnetic, gravitational, weak nuclear and strong nuclear respectively.
Out of these, most of the forces that we encounter in our daily life are electromagnetic. Whether we talk about tension in a string, or the spring force, or the normal reaction, or the friction, or the force between cells, or the forces between between electrons and nucleus. So all of these forces are electromagnetic, and they dominates our daily life at laboratory scale. So most of the forces that we encounter in a daily life are electromagnetic. Then in general life, macroscopic scale, electromagnetic forces dominate. This is what I said earlier. नाउ इफ़ यू टॉक एट न्यूक्लियर स्केल मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम जब डिस्टेंस है, जब आप न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा. और अगर हम एक न्यूक्लियर फोर्स के कोरिस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाएं, तो ऐसा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आता है, आप देख सकते हैं. और ये यहाँ पे कहीं इक्विलिब्रियम होता है लगभग 0.8 FM पे, और लगभग 3 FM पे ये फोर्सेस ज़ीरो हो जाते हैं. सो दिस इज़ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी of a system of two nucleons as a function of the distance between them. So this is how we can find applications of forces. Now let's understand force from a more conceptual discussion on force, that how to feel the force. So force we feel like a pull or a push. So एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए. सपोज करें एक स्टूडेंट है और ये एक सोचो कि ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे, और ये इस ब्लॉक को पुश कर रहा है. तो आप फील कर पा रहे होंगे कि बच्चे को भी फील हो रहा होगा कि ब्लॉक उसको पीछे धकेल रहा है, और अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक को फील होता होगा कि उसको आगे धकेला जा रहा है. सो फोर्स वी फील इंट्यूटिवली बाय द पुल और पुश मैकेनिज्म. और इसका एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इट इज़ एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म थ्रू वर्क. इसको समझने के लिए आप एक केस ले लें. मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, और मान लेते हैं कि आपके अंदर 500 जूल एनर्जी है, और आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं, और साइकिल चलाने के बाद आप वापस आ जाते हैं, और मान लीजिए कि आपके अंदर 200 जूल एनर्जी बचा हुआ है. तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो होगा 500 - 300, मतलब 300 जूल सॉरी. तो अपने आप से पूछें कि ये 300 जूल एनर्जी गया कहाँ, वेयर इट हैज़ गॉन. So this is the work done by you on surrounding by applying force. अब इसको you can feel कि जब आप साइकिल चला के वापस आते हैं आपको थकान होती है. थकान का मतलब एनर्जी नहीं है आपके अंदर, तो एनर्जी कहीं आपने यूज़ किया. सो एनर्जी यूज़ किया तो उसी को हम वर्क डन की फॉर्म में डिसिपेट कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली ये कि जब भी आप किसी बॉडी को पुल या पुश करेंगे और वो ट्रांसफ़र वो मूव करेगा, तो उस मोमेंट में कुछ ना कुछ वर्क आप उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे. तो यहाँ से वर्क डन की अगर बात करें या फोर्स की बात करें, सो फोर्स कैन बी थॉट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. आप सोचें एक साइकिल रेस्ट में खड़ा है, आपने उस पर फोर्स लगाया और उसकी वजह से उसमें एनर्जी आ गया. तो यू हैव ट्रांसफर्ड योर एनर्जी to the cycle through the application of force. So it can be referred to as a energy transfer mechanism also. अब इसके बारे में कुछ बातें करेंगे मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव में, कुछ एनालिटिकल बातें, एनालिसिस देखेंगे इसका. तो एनालिसिस में है फर्स्ट पॉइंट, दैट फोर्स कैन बी एवरेज फोर्स और द इंस्टेंटेनियस फोर्स. अभी एवरेज फोर्स क्या होता है, ये होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. यहीं से एक एप्लीकेशन आएगा इसके डायमेंशन का. तो डायमेंशन ऑफ फोर्स होगा डायमेंशन ऑफ मोमेंटम बाय डायमेंशन ऑफ टाइम. मोमेंटम का डायमेंशन होगा m1 l1 t-1, टाइम का टाइम होता है, तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन आएगा m1 l1 t-2. नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स का ऐसा यूनिट, तो ये न्यूटन होता है, और इसको kg मीटर सेकंड -2 भी कहा जाता है. सीजीएस यूनिट की बात करें, ये डायन होता है, इसको ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2 भी कहा जाता है. अनदर केस इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डायन, and 1 dyne is equals to 10⁻⁻5 Newton. Another concept is instantaneous force is dp by dt, and another concept is if we need to calculate force from the graph of momentum versus time. So suppose this is the momentum time graph and there is a point P. This is angle theta, this is angle alpha. So instantaneous force is dp by dt, which is equal to tan theta, which is also equal to minus of tan alpha.
यहीं से अगर हम बात करें इम्पल्स की, तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम P2 minus P1 which is integration of FDT. So here I is the impulse, or it is also called as the impact of force. So this is how you can visualize the impulse itself. Now there is another concept of force versus time. So if we calculate the integration of FDT, which is impulse, so from force time graph we can say that integration of FDT will be area under force time graph with proper sign convention. So that will be A1 minus A2 plus A3. So this is how we can use force in calculating the impulse of a given force. Force also finds application in work done, which is F dot S, which is Fs cos theta. So here F is the force, S is the displacement, theta is the angle between force and displacement. Now we have different cases for work done corresponding to different angles. For example, if work done is positive, when cos theta will be positive, and which is possible when theta is acute or less than 90 degree. Work done will be negative when cos theta will be negative, which is possible when theta is obtuse, and work done in 0 when cos theta is 0, which is possible when theta is equals to 90 degree. So this question can be asked that under what condition work done by a force is positive, negative, 0, minima or maxima. So these can be answered by analyzing the cos theta term. So work done is positive when theta is acute, work done is negative when theta is obtuse, and work done is 0 when theta is equals to 90. Another concept is that work done by a variable force is integration of F dot is from the limit R1 to R2. So if you have any doubt, you can ask in the. Thank you and have a nice day.